Okay, students, a very good morning and welcome back to class 12th physics. And we were going ahead with the topic of electromagnetic induction. ठीक है, EMI के टॉपिक पे हम लोग चल रहे थे. इसमें लास्ट लेक्चर जो कल हमने किया था, that was based on motional EMF. ठीक है, तो motional EMF से रिलेटेड हमने थ्योरी पढ़ ली थी. motional EMF कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए. We studied the conditions and we came on to the generalized formula expression that induced EMF E is given as vector V cross vector V dot vector L. ठीक है, डॉट वेक्टर L. अब आज इससे जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखोगे तुम when we will be doing particular problems on motional EMF. There are a lot of new things and today's lecture will be the last lecture on motional EMF, जिसमें इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे and then you can try out problems from any of the different books. ठीक है, so here we go ahead with problem number 1 which says find the induced EMF in the system shown in the system given and also draw the imaginary cell and also draw the imaginary cell. अब why the same imaginary cell उसका रीजन है क्योंकि जब तुम कंडक्टर को मूव करते हो तो एक EMF जनरेट होता है. ठीक है, and EMF is induced in that conductor. If an EMF is induced in that conductor, so it starts behaving like a cell. ठीक है, so let's go ahead and here we have conductor or problem number 1, system number 1. ऐसे काफी सारे सिस्टम्स आप लेंगे और ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज तुम्हें क्या देखनी है, तुमको देखना है that VBL ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या किसी एंगल पे. So here we have the first system and remember यहाँ पे खाली ये नहीं पता लगाना है कि induced EMF कितना है, यहाँ पे ये भी पता लगाना है we need to draw the imaginary cell. So suppose this conductor is being moved in this particular direction with velocity v, magnetic field B which is a constant, length vector L again a constant and it is being moved with a constant velocity in this particular direction. ठीक है, first of all what will be the induced EMF. ठीक है, पहला प्रॉब्लम मैं करता हूं, वार्म अप हो जाएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आप करना शुरू करेंगे. So let's go ahead with V cross B and in this problem it is very clear that V और तीसरा वेक्टर L. I need a marker, one more marker. Yes, I have V, B and L. If you see V, B and L and vector L, all three are mutually perpendicular to each other. तुमको इससे अच्छा दिख रहा होगा शैडो में, अगर आप शैडो को देखें तो क्लियर दिख रहा है. All three are mutually perpendicular to each other, right? So now if you see, the first step that we do is E is equals to V cross B, to V B sine of angle between them which is 90 degrees dot vector L. So we get E is equals to VB dot vector L. A V cross B, what is the direction of V cross B? Please find out what is the direction of V cross B. So V ऊपर की ओर है, B अंदर की ओर है. So that means V cross B is in this particular direction. V cross B is in this particular direction. सही है? हाँ भाई, fetch out the direction for V cross B. Fetch out the direction of V cross B. V ऊपर की ओर है, B inside है. That means V cross B is in this particular direction. V cross B. We have the direction of V cross B. So what is the angle? Very good, left. What is the angle between V cross B and L? 0 degree. So I can say EMF E is VBL cos of 0 degree. Cos of 0 is 1. So I have E is equals to BVL. This will be the induced EMF. But question यहाँ इधर नहीं होता. Question also asks you
that draw the imaginary cell. Draw the imaginary cell. तो इस पॉइंट को मान लो, इस एंड को मान लो A, इस एंड को मान लो B. तो अगर इमेजिनरी सेल बनाना है, that means positive or negative terminal choose करना. So remember, for any of these questions, the direction of V cross B is the direction of the positive terminal. लिख देता हूं यहां, ध्यान से देख लो स्टार पॉइंट, आगे यही काम करना है. Direction of V cross B is the direction for positive terminal. अभी आगे और भी चीजें खुलेंगी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे. Is this part very much clear to all of you? Yes, please. Is this part very much clear to all of you? Is it clear? Hurry up. Okay, fine. चलो तो बढ़ते हैं आगे. ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सिस्टम पे. ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सिस्टम पे. ओके, तो ये वार्म अप हो गया है सबका. So let's move on to another system. We have over here. Again, we have magnetic field B, which is inside the plane of the board. Okay, inside the plane of the board hai. And this time you have a rod. This time you have a rod which is placed horizontally. But it is now being moved with a velocity v at an angle of 37 degrees. This is being moved with the velocity v in such an angle. ये rod ऐसे करके move किया है at an angle of 37 degrees. We need to find out the induced EMF and draw the imaginary cell. So starting it. So EMF E would be V cross B. That means VB sine of angle theta dot vector L. What is the value of theta over here? What is the value of theta over here? Very good one. BVL cos 53. Okay, great. Yes. इसके पहले मेरे को साइन की वैल्यू बता भैया. अमन डायरेक्टली कूद गया हो तुम. साइन की वैल्यू बता. साइन की वैल्यू में बहुत लोग मिस कर रहे हैं. हरी अप 90 डिग्री. वाह. अमन चेक करो बेटा, किधर क्या बोल रहे हो. अमन चेक करो. अदर्स ऑल्सो काइंडली रिस्पॉन्ड. यस. बाकी लोग भी बताओ भाई. एंगल सब कुछ तुम्हारे सामने दिए हुए हैं. अमन फिगर बना के करो. देखो कहां गड़बड़ कर रहे हो. यस. अदर्स रिस्पॉन्ड क्विकली. साक्षी, तरुणे, अनुष्का, प्रज्वल, प्रियांशु शर्मा, आंसर दीजिए. साक्षी ऑल्सो सेज 90 डिग्री. सोनू बार. तरुणे, व्हाट इज द आंसर? एंगल कितना है? साक्षी फिगर बना के चेक करो. Everybody says 90 and yes, I go ahead with 90 only. Correct answer is 90. ठीक है. But of course यहाँ पे दिख रहा है बेटा V वेक्टर ऐसे जा रहा है. V वेक्टर ऐसे जा रहा है और B वेक्टर अंदर. ठीक है. Angle is truly 90 degrees. देखो ये on the plane of the board है और वो अंदर की ओर जा रहा है. That means angle is 90 degrees. So I have V sin 90 dot L. So induced EMF E will be VB dot L. अब V cross B. Now V cross B. देखो V वेक्टर इधर जा रहा है. V और B किधर है? अंदर की ओर है. तो V cross B. तो थंब किधर आ रहा है? थंब is going this way. So I have V cross B in this particular direction. Now, if you have a vector C which is given by cross product of A and B, that is A cross B is vector C, then vector C will be perpendicular to vector A
as well as vector C will be perpendicular to vector B. ये हमको मालूम है. This we have already studied in vectors. So vector A cross V cross B जो तुम्हें इधर आ रहा है, this will be perpendicular to V as well as B. V cross B will be perpendicular to V as well as B. So that means this angle is how much? 90 degree. This angle is how much? 90 degree. ये 90, ये 37, तो बचा हुआ ये एंगल कितना होगा? This angle will be 53 degrees. This angle will be 53 degrees. L vector कहीं पे भी ले सकते हो. तो if you see L vector over here, length vector, ठीक है? तो length vector of V cross B, angle कितना इन दोनों के बीच? 53. So what I get over here, I'll get VB dot L as VBL. E is equals to VBL cos of 53 degrees. Cos of 53 is 3 by 5. ठीक है? So E is equals to VBL into 3 by 5. That is 3 by 5 VBL volts. Clear to all? अब बात करनी है imaginary cell की. बात करनी है imaginary cell की. तो if I mark this end as A and this end as B, अगर ये end A है, ये end B है, so which end is positive? Kindly text which end will be positive. इसमें से कौन सा end positive होगा? Hurry up. Which end will be positive? Quick. Which end will be positive? Very good. A will be positive. Great. क्यों? V cross B इस end पे आ रहा है. V cross B की डायरेक्शन A की ओर टेंड कर रही है, so A will be positive. तो अगर यहाँ पे if you have a question, suppose तुमको A और B already question में दिया होता, and if it was asking that find VA minus VB, find VA minus VB, तो कितना आता? 3 by 5 BBL volts. But if it would have asked VB minus VA, तो क्या हो जाता? ये हो जाता minus 3 by 5 BBL volt. या फिर ये नेगेटिव लिखते तुम. क्यों? क्योंकि नेगेटिव 2 का पोटेंशियल इज ऑलवेज लेसर देन द पॉजिटिव. इज इट क्लियर? ये प्रॉब्लम क्लियर है भाई? हाँ. Is this problem clear to all? Yes? Clear है? चलो ठीक है. चलो अगले टाइप पे चलते हैं. And now question is, this time field is outwards. This time field is outwards. अब की बार जो फील्ड है that is in the outward direction. ठीक है? बाहर की ओर. और अपनी जो रॉड है अब की बार वो इस टाइप से रखी है. देखो. ठीक है? This time the rod has been placed like this and it is being moved. ये magnetic field B, it is being moved with a velocity V at an angle of 30 degrees. At an angle of 30 degrees in such a way. ठीक है? तो प्रोसीड करके सबसे पहले मेरे को वैल्यू बताओ. V क्रॉस B, that is VB sin dot L. What will be the value of angle theta? पहली चीज, पहला डेटा बताओ. What will be the value of angle theta over here? V क्रॉस B के VB sin एंगल कितना आएगा? वेरी गुड अमन. कितना आएगा? 90 डिग्री. साइन 90. बहुत क्लियर है. V ऐसे जा रहा है, B अंदर की ओर है. V ऐसे जा रहा है, B अंदर की ओर है. बहुत क्लियरली दिख रहा है कि V ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और B अंदर की ओर है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. ठीक है? वेरी मच क्लियर. कितना होगा? 90 डिग्री. तो ये तो हमने 90 लिख दिया डॉट है. तो ये आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको पहले तो एंड ले लेते हैं. ये A, ये B. ठीक है? ये हो जाएगा E is equals to
BV dot L. ठीक. Now, what will be the direction of V cross B? What will be the direction of V cross B? जल्दी से बताओ. What will be the direction of V cross B? V cross B. तो ये रहा V, ठीक है, ये रहा V क्रॉस B. V क्रॉस B करके देखो भाई. V क्रॉस B. ये V है और B बाहर की ओर है, तो V क्रॉस B. V क्रॉस B. देखो मेरा थंब किधर आ रहा है? Thumb is coming in this direction. That means V cross B will have a direction this way. V cross B will have a direction this way and it will be perpendicular, but of course ये इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी बताया था कि A cross B vector is equal to C vector, तो C vector will be perpendicular to A as well as perpendicular to B. तो V cross B will be perpendicular to B as well as B. तो ये 90, ये 30, 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. L vector इधर डायरेक्शन में ले सकते हैं. So finally what I'll get E is equals to BV dot L. So E is equals to BVL cos of 60 degree, which is 1 by 2. So E is equals to BVL by 2 volts. Now what about the positive terminal? Which one will be the positive terminal now? Positive terminal कौन सा होगा इसमें से? Which one? Very good. B will be positive. तो अगर इमेजिनरी सेल बनाना है तो इमेजिनरी सेल कैसे बनाएंगे? बेटा पॉजिटिव. ये आ गया B, ये आ गया B. नेगेटिव, पॉजिटिव. Okay. So great. Everybody is able to give the answer. तो ये टाइप के प्रॉब्लम आई थिंक ये आप आराम से उठा कर सकते हो. तो अब चलते हैं कुछ नई चीज सीखने. ठीक है, अब चलते हैं कुछ नई चीज सीखने. मोशनल ईएमएफ में ही अगर सिस्टम चेंज करके आ जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं? Now here is the question. This time again you have a magnetic field that also is directed inside the plane of the board. और खेल अब की थोड़ा सा है अलग. और खेल है ये कि this time you have a rod which is bent in the shape of a semicircular loop. You have a rod which is bent in the shape of a semicircular loop. ठीक है, ये रॉड है जो सेमीसर्कुलर लूप के फॉर्म में है and it has a radius of r. Radius इसका कैपिटल R है. Now it is asking you to find out the value of induced EMF as well as to find out the imaginary cell. Draw the imaginary cell. अब इस टाइप की प्रॉब्लम में जहां A, B एक रॉड है which is in the form of a semicircular shape. Closed loop नहीं. I repeat, closed loop नहीं. ये A से B तक एक रॉड है. अब क्या करना है? It is being moved with a particular velocity v in this direction. ये velocity v से इसको इस डायरेक्शन में ले जाना है. ठीक है, अब इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करना है सुनो. इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए the important point that you need to remember is that vector L is the displacement vector obtained by joining initial and final points लिख देता हूं irrespective of the shape, the displacement vector obtained by joining the initial and final points irrespective of the shape, condition
कंडीशन इसको लगाने के लिए V and B are constant। ध्यान रखना, V and B are constant। ठीक है, V and B are constant और तुम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह डील करोगे। जस्ट यू नीड टू जॉइन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। कहने का मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? कहने का मतलब यह है कि ये जो सेमी सर्कुलर रॉड है इसको भूल जाओ, इसके एंड पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करो एंड यू गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और तुमको उसी से तो मतलब है, तुमको तो मतलब उसी से है ना भाई। एंड नाउ इट इज बीइंग मूव्ड विद अ वेलोसिटी v। The length of this displacement vector is radius r tha 2r, that's 2r। And now the problem is simplified for you। अब तो ये पुराने वाले केस की तरह हो गया। Now this is like old case for you people। ठीक है, ये पुराना वाला केस तो हो गया, तो जल्दी से निकालो what will be the induced EMF E now in this case। Yes, Anish, what will be the induced EMF now in this particular case? जल्दी से निकाल के बताओ। And the direction, कौन सा टर्मिनल इसमें पॉजिटिव होगा? वेरी गुड, अमन हैज कम अप विद द आंसर। बाकी लोग भी बताओ जल्दी से भाई, बाकी लोग भी बताओ। अनीश, वेदांत, अनुष्का, प्रियांशु, साक्षी, प्रज्वल, सोनू। Okay, so everybody comes up with E is equals to dV into 2R. That's the correct answer, and the positive part is terminal A। So V cross B, direction ये आ रहा है, so but of course we have terminal A as positive and terminal B as negative। Okay, so I hope everybody got this answer। तो चलो अब इसी में एक अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, let's move on to another type of क्वेश्चन। आई होप कि लेंथ वेक्टर का खेला तुमको क्लियर हो गया होगा। ओके, एक क्वेश्चन जरा अपने आप ट्राई करके देखो। ओके, हम तुमको दे रहे हैं एक लूप। दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू अ लूप टू वर्क ऑन। ओके, this time we have a rectangular loop which is of length L, breadth B, L, breadth B, and it is being moved। Magnetic field B constant है, velocity V कंडक्टर की, जिससे ये लूप A B C D लिख देता हूं, A B C D। It has been moved with velocity v in uniform magnetic field B। What is the induced EMF in this loop? How much is the induced EMF in this loop? ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं। Let's take, okay, Aman has come up with the answer। बिल्कुल अमन चेक कर लेते हैं। Let's take for wire AB, for conductor AB। ठीक है, AB for AB। AB के लिए गौर से देखो, AB के लिए गौर से देखो। For AB, its length vector and velocity vector are parallel। इसका length vector और velocity vector parallel है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो induced EMF कितना हो जाता है? 0। induced EMF 0। For BC इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, V, L और B, तीनों परपेंडिकुलर है, तो B V L, सिंपल, E is equals to B V L। जरा पोलैरिटी देखो, तो V क्रॉस B, दैट मींस B की ओर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है। तो here I can make an imaginary cell like this, positive, negative। Positive। Let's talk about CD।
और CD इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से 0 व्हाई क्योंकि CD को देखोगे तो लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर फिर से पैरेलल है टू वेक्टर्स आर पैरेलल इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगी। अब बात करते हैं DA की और DA या AD की तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E कितना आएगा फिर से तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इट विल बी BVL but we talk about the polarity तो V क्रॉस B V वेक्टर की वेलोसिटी B से इधर जा रहा है तो V क्रॉस B इधर की हो रहा है ऊपर की ओर दैट मींस अगेन आई कैन मेक an imaginary cell over here positive terminal like this and negative terminal like this ठीक है अब there are two cells which are connected in such a polarity इससे भी करंट I और इससे भी करंट I इक्वल वैल्यू का आएगा so you can understand the net induced EMF for this whole system would be 0 काफी तीन लोगों ने आंसर लिख दिया net induced EMF in this case would be 0 ठीक है now there is one more way to see this maybe आप लोगों ने शायद वही प्रोसेस देखा होगा there is one more way to see this which is as per Faraday's law Faraday's law के हिसाब से देखोगे तो फ्लक्स phi which is BA magnetic field into area into cos of theta ये यहाँ पे 0 डिग्री if you see is there a change in magnetic flux no is there a change in area of the loop no that means flux phi is a constant जो नेट फ्लक्स phi है इस लूप के अक्रॉस passing through the loop is constant if net flux passing through the loop is constant therefore EMF which is mod of d phi by dt phi constant है तो d phi by dt कितना हो जाएगा 0 hence again you can see that induced EMF E in this case is 0 is it clear to all is it clear to all of you हाँ भाई clear है is this part clear to all of you दोनों साइड से चलो तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं and this one is a very good question which is going to review all the concepts of your motional EMF ठीक है चलो देखते हैं ध्यान रखना जो पॉइंट आज हम लोगों ने करे और सीखे हैं अभी क्वेश्चन लिखते हैं इसमें up to the time please draw a figure this one will give you all the major concepts ठीक है ना now we have a circular loop we have a circular loop in such a way radius of the loop is say r radius of loop equals to r ठीक है here you have diametrically opposite points okay here you have the center let us name these points as A B C D ठीक है and it is asking you find ये किस डायरेक्शन में ये D है and it is being moved in this direction with velocity ये वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चला है ठीक है लूप को मूव कर रहा है फाइंड
Number one, net EMF induced. Number two, VA minus VC. Number three, VD minus VB. VD minus VB. Number four, VA minus VB. This is the data that we need to find out. ठीक है, ये डेटा हमको निकालना है. So the first thing, find out the net induced EMF. Net induced EMF निकालना. Find out the net induced EMF. Part 1. What will be the net induced EMF? Jaldi. What will be the net induced EMF? Very good. It is 0. Net induced EMF E will be 0. चाहे Faraday's law से देख लो, चाहे किसी भी प्रोसेस से देख लो. Why? Magnetic field constant, area of the loop constant. तो जब तुम इसको मूव करोगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस EMF will not be there. So first part is EMF E is 0. Now what about second part? VA minus VC. VA minus VC. Part number 2, we need to find out VA minus VC. मतलब बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं VAVC की. तो VAVC में कौन सा पार्ट है? ये पार्ट. बट क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? नहीं कंसीडर करेंगे. हम केवल इस रॉड को कंसीडर करेंगे, लेंथ वेक्टर AC को. और लेंथ वेक्टर AC को कंसीडर करोगे तो इधर भी मूव कर रहा है. All three are mutually perpendicular. That means it will be VVL. और L कितना है? L is 2R. L is 2R. अच्छा, बात करनी है पोलैरिटी की भी. क्यों? क्योंकि VA माइनस VC पूछ रहा है. तो पोलैरिटी देखो, V क्रॉस P. A ऊपर है, पॉजिटिव है, तो बट ऑफ कोर्स A पॉजिटिव टर्मिनल आएगा C की रिस्पेक्ट में, एंड इट विल बी द आंसर विल बी VV2R. 2VVR. Is it clear to all of you? बेटा क्लियर है? बच्चों क्लियर है ये? सबको समझ में आ गया? How do I got VA minus VC as 2VVR? Is it clear to all of you? Only one student is responding, others are sleeping beauty. बाकियों को समझ में आ गई है ये टॉपिक? ठीक है, चलो. तो आजा थर्ड वाले पे, और जल्दी से थर्ड वाला निकाल के बताओ. What is VD minus VB? VD minus VB. VD minus VB. थर्ड वाला बताओ. What is VD minus VB? VD minus VB. एक ही आंसर आया है अभी तक. VD minus VB. Very good, Priyanshu and Aman. VD minus VB will be 0. क्यों 0 हो जाएगा? अरे यार VD VB लेंथ वेक्टर लोगे तो लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर both are parallel to each other. If two vectors are parallel to each other, induced EMF will be 0. So this induced EMF is 0. खेल आता है फाइनल, दैट इज VA minus VB. VA minus VB. तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वापस से लेंथ वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा. तो अज्यूम कर लेते हैं हम VA और VB पे you have a rod which is placed like this. You have a rod which is placed like this. ठीक है. अब ये रॉड का लेंथ कितना आएगा? ये R, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √2R. ठीक है. ये एंगल 90 डिग्री बराबर. ये एंगल 45 डिग्री. बहुत क्लियर है. क्यों? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. भाई देखो, ये भी R, ये 90 डिग्री. तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे 45. ना वेलोसिटी वेक्टर V को देखो, वेलोसिटी वेक्टर V ऐसे. वेलोसिटी वेक्टर V कैसे? V ऐसे. ये है. Now, what is the angle
फॉर V क्रॉस B का डायरेक्शन देखना है, क्योंकि यहाँ पे केस कौन सा आ गया, जनरलाइज्ड केस आ गया। वी आर हैविंग अ जनरलाइज्ड केस, तो चेक करते हैं। तो V क्रॉस B, दैट मींस V क्रॉस B का वेक्टर किधर आ रहा है, V क्रॉस B का वेक्टर किधर आ रहा है। This is what we are having, V cross B, and V cross B will be perpendicular to V. If V cross B is perpendicular to V, that means ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये है लेंथ वेक्टर, ये है लेंथ वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर और L क्रॉस और V क्रॉस B के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्रीज। So what will I get induced EMF E as V B sin of V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री था, dot L, so E will be equals to B L cos of 45 degree, cos of 45 degree. So E is equals to B V, L कितना है, let √2R into cos of 45, 1 by √2. √2 gets cancelled, so I have EMF E as BVR volt. बट फिर अभी हमें ये भी पता करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा इसमें, which one will be the positive terminal in this case? Which one will be the positive terminal in this particular case? Hurry up. Which one will be the positive terminal in this particular case? कौन सा इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होगा? वेरी गुड, A will be the positive terminal. ये कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव, B होगा नेगेटिव। Therefore VA minus VD will be positive and this will be VBR volt। अगर ये नेगेटिव होता तो हम माइनस का साइन पुट करते, ठीक है। So are these sort of questions and this topic very much clear to all of you? इसमें इसके बाहर का क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। Are these sort of questions and topic very much clear to all the students? सबको क्लियर है बहुत अच्छे से? Yes? हाँ भाई, is it clear to all of you? Okay, so we take a break. That's all for today. With this, we end up with our motional E.M.F. Thank you very much. Enjoy your day. Have a nice day. Stay safe. Stay home. Take care. से भारत माता की जय. Thank you.